Good morning, my dear students. This is going to be our third lecture on elimination reaction. Remember, in my second lecture I told you substitution reaction. We took methane and we changed methane to monochloromethane, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane. Hydrogen was removed and another element was brought in. Today we will simply remove without bringing anyone in. We will simply eliminate without bringing anyone in. 3 examples I am clubbing. This is C2H6, as you know, ethane. And when it is given heat, energy, in absence of air होगी तो जल जाएगा. In absence of air, then it loses hydrogen molecule and changes to C2H4. You know C2H4 is ethene. This ethane. So while changing ethane to ethene, what has taken place? Eliminated. So the name of this reaction can also be called dehydrogenation. Dehydrogenation, in which we remove hydrogen atom from the molecule. Take yet another example. Second example, C2H4Cl2. 2 क्लोरीन इथेन के मॉलिक्यूल में, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल इथेन का है. Dichloroethane. And when this dichloroethane is heated with zinc powder, it walks away with chlorine because they are made for each other. Their chemical affinity is more. ZnCl2, zinc chloride, and remainder is C2H4. Again you have made ethene from this molecule. I gave a name dichloroethane, and in this change what have we done? We have eliminated chlorine. हटा दिया, बचाइए. We call it dehalogenation. डिलीट कर दीजिए हेलोजन को, dehalogenation, and we get again ethene. We take yet another example. Third example. Now I make it like this. You know this compound, OH group आते ही we call them alcohol. 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल. When ethanol is heated with sulfuric acid concentrated, 10th में पढ़ाया है आपको, and sulfuric acid concentrated is a dehydrating agent, पानी खींच लेता है. So it removes water molecule from here, H or OH. क्या बचा? C2H4. Again you get ethene. To change this into that, क्या किया आपने? You remove water molecule. जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेट हो गया. So we call this reaction as dehydration. Dehydration reaction.
द मॉलिक्यूल इज अंडरगॉन डिहाइड्रेशन, फिर डिलीट हो गया। इट्स अगेन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन। गए, लौट कर कोई नहीं आया, ये चले गए और लौट कर कोई नहीं आया, सो वी मेक वन बॉन्ड। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल, which is the virtually the last example of this series, is we take this compound, again from ethane, chlorine यहाँ आ गई, monochloroethane, monochloroethane, and when this compound is heated with KOH in alcoholic solution. Why alcoholic? Because we have organic compounds. This organic solvent, same phase, कर दीजिए गरम। Don't trend the equations, पता लगाओ who is made for whom, who is made for whom। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम इज मेड फॉर क्लोरीन, क्लोरीन इज मेड फॉर पोटेशियम, इन दोनों का जाना आवश्यक है। KCl, now you are left with this and you are left with that. They also make a team, H and OH meaning water, HOH meaning water. So let's remove water. What's left with you? You are again left with this portion. मैंने कहा था मॉलिक्यूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लोज द डोर, दोनों दरवाजे को जोड़ दीजिए, दोनों पल्लों को जोड़ दीजिए, एंड यू क्लोज द डोर, यू आर नाउ फुल। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इथीन, कितने तरह से इथीन बना लिया आज आप लोगों ने। इस बार क्या हटाया था आपने? एक हाइड्रोजन, एक हेलोजन, एंड दिस एग्जांपल इज नोन एज डीहेलो हाइड्रोजनेशन। डिलीट कर दीजिए हेलोजन हाइड्रोजन, और जब जब डिलीट करेंगे तब बॉन्ड बढ़ जाएंगे। सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो सकता है और डबल ट्रिपल में चेंज हो सकता है। एलिमिनेशन रिएक्शन लीड्स टू अनसैचुरेशन। अब हमारे मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड हो गए हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए हैं। सो हियर वी क्लोज आवर थर्ड लेक्चर टुडे माय डियर चिल्ड्रन। Remember, heading was elimination, reaction, dehydration, उसके पहले dehydrogenation, dehalogenation and dehydrohalogenation. And everywhere we got alkene, which is unsaturated hydrocarbon. This side we were saturated, that side unsaturated. God bless you.